हाय गाइस, वी आर लाइव नाउ। तो इसको काट दिया जाए। लेट मी say some things before starting that we are not any kind of teaching channel or nor we are anything. Just want to start my shit and I just want to do shit. बस इतना ही करना था and I don't give a fuck about whatever you want to say me or whatever to do. Our goal is today, just today to like स्टार्ट करते हैं स्टडीज़ एंड उसके बाद फिर वी विल डू एनीथिंग वी वांट टू। हाँ, भूख लग रही है थोड़ी तो आई हैव फूड फॉर मी एंड उसके बाद वी विल जस्ट स्टार्ट अगेन। एंड ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है मेरी कि आई एम गोइंग टू सॉल्व और टीच एनीथिंग टू यू गाइस। तो बस आज हम लोग पुराने प्रीवियस ईयर के जो भी मॉक्स पेपर है उन सारों को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे एंड वी विल सी दैट कि क्या क्या हो सकती है क्या क्या नहीं हो सकती है। जस्ट इतना है और कुछ करना नहीं है मेरे को, मेरी लाइफ में तो और कुछ है नहीं। तो आई जस्ट ईट 2 स्पून एंड उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड आई एम नॉट वॉचिंग माई चैनल क्या हो रहा है क्या सीन है। आई एम जस्ट गोना स्टार्ट माई डे। I'm not alone. हाँ हाँ हाँ। Someday I see that you dance and shrill like daffodils. Shrill like daffodils. Oh, shrill. Hmm.
Okay, I'm starting my shit. Definitely not gonna have. All right. Just for my, I'm gonna give my test. All right, guys, let's begin. कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अपने को शोबज करने का. वी आर जस्ट गोना स्टार्ट. एंड देखो, ये एक मॉक पेपर था 2023 का. आई जस्ट फाउंड इट आउट एंड वी हैव ऑलरेडी उतारा आउट हेयर एंड वी आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व दिस. Timer, I will pick a timer for me. Where is timer? Okay, so I have a timer and let's do RC timer, ठीक है. स्टॉप वॉच पे रखते हैं इसको. चलो, क्या लिखा है? लिखा है कि द मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक थ्योरी क्लेम्स, ठीक है. ओके, ओपन सोर्स का बात कर रहा है, ठीक है. ओपन सोर्स डिजाइन है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, ठीक है. क्वेश्चन पे आ गए हैं. क्वेश्चन पे आ गए हैं. Then there is, according to the passage, how do free, open and hardware challenge mainstream on the ecological properties. This is a fact-based question, ठीक है. This is a fact-based question. Question क्या बोलता है? Which of the following is true? Best support the. This is critical reasoning का question, ठीक है. We are not going to have timer. Just which of the following measure would common between Muslim and teacher. This is also reasoning slash inference. And last वाला है, which one of the following sets the best term to serves as a keyword of the passage. अच्छा, set terms of the keyword of the passage. इसको पढ़ लेते हैं. Intellectual property, open source, centralized product, corporate capitalism, competition, corporate control, knowledge monopolies, common theory. Open source का बात नहीं हुआ है यहाँ पे. I don't think that. Proprietary software, patent protection, limited accessibility, private research.
बेस्ट ये वाला सर्व्स एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे तो बात हुआ था, ओपन सोर्स कोलैबोरेशन, तो मेरे को तो ये ऑप्शन लग रहा है, बस लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं, 3 मिनट हो गया है, लेट्स सी दिस पैसेज। ओके, नॉट, इट वाजंट अ टफ पैसेज फॉर मी, देखते हैं आगे सीन क्या है। According to the passage, how do FOSS and FO challenge mainstream economic theory on intellectual property protection? ठीक है, intellectual property can be easily made available at no low cost, making them accessible to wide range of university. Questionable है, by highlighting the irrelevance of production in maintaining a competitive market, by showing that can reading costed without need of नहीं, ये तो नहीं है, by demonstrating project foster innovation and accelerate the development of new feature and improvements, yes यही होगा। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है कि claims that without innovators lack the incentive to bring new products, okay, to the market because they cannot recoup the cost। पर यहाँ बोला कि नहीं नहीं, FOSS में तो ये तो हो सकता है। तो ये है, by demonstrating that FOSS project foster innovation and accelerate the development of new, by showing that can redeem cost without questionable, ये बात नहीं होता। which of the following if true, let's suppose the Joshua Pierce argument in second paragraph। तो Joshua Pierce बोला था कि मेरे हिसाब से कि फंडिंग चाहिए,
State funded do not have enough budget to purchase proprietary scientific equipment without financial strain. The growth of hardware industry has no impact on innovation in scientific community. अगर ये सच होता तो आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं. द मेजॉरिटी साइंटिस्ट टेंड टू फेवर proprietary because of exclusive 3D printer have higher maintenance cost. Do not have enough budget to purchase proprietary scientific equipment without financial strain. अगर ये सच होता, ये अगर सच होता तो देखो क्या बोला है, ओपन कॉस्ट सेविंग्स फॉर स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन इन एवरी कंट्री. तो अगर ये सच होता है कि स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट डू नॉट हैव एनफ बजट टू परचेज प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे सही होता है. ग्रोथ ऑफ ये सब कुछ नहीं है. Which of the following measures would common theorist would be likely disapprove of? तो माइकल बॉवेंस का बात कहाँ हुआ था? माइकल बॉवेंस का बात यहाँ नहीं हुआ था. हाँ, माइकल बॉवेंस का बात सेकेंड पैरा में नहीं होती थी. नहीं, सेकेंड पैरा में तो नहीं होती माइकल बॉवेंस का बात. माइकल बॉवेंस कहाँ है? देखो यहाँ पे, बट argues the common theorist is unlikely to without state support. ठीक है, तो ये बात हुआ था माइकल बॉवेंस का. तो इसके बाद देखते हैं which of the following measures would common theorist be most likely to disapprove of. मतलब किससे वो डिसएग्री करेगा या फिर उसको नहीं. प्रमोटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस सिविक ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, ये हो सकता है. सिविक ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन द कोलैबोरेटिव नेटवर्क, एडवोकेटिंग फॉर द dissemination of findings within the knowledge count. Advocating for dissemination है. Strengthening exclusivity of knowledge नहीं. And ideas through stringent intellectual property नहीं. Supporting the creation of for access. Promoting the establishment of मोस्ट लाइकली तो डिसअप्रूव होगा. ठीक है, तो मोस्ट लाइकली डिसअप्रूव किसको करेगा? इसको करेगा ये. स्ट्रेंथनिंग द एक्सक्लूसिविटी ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज थ्रू इंटेलेक्चुअल एंड ओपन सोर्स कोलैबोरेशन, कॉमन थ्योरीज, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पब्लिक फंडिंग. तो ये है. तो ये है इसका आंसर. एंड वी आर डन इन 11 minutes 29 seconds. So this passage took us 11 minutes and 29 seconds. ठीक है, 11 minutes and 29 seconds. I know that is a very slow for us, but accurate कितना है? Let's check. पहला का देखते हैं आंसर. शो आंसर by showing reading cost without need of intellectual property. सी है. बाय शोइंग कैन रिडीम कॉस्ट विदाउट, नहीं, गलत हुआ ना. तो यहाँ पे -1. ठीक है, समझ आ गया कि गलत क्यों हुआ. नेक्स्ट जाते हैं. शो द आंसर. स्टेट फंडेड डू नॉट हैव एनफ बजट. ठीक है, ये सही हो गया. +3. ठीक है. एक्यूरेसी क्या था इस पे? देखो तो ओवरऑल टॉपर्स का एक्यूरेसी, ओवरऑल एक्यूरेसी इस पे कम था सबका. आई थिंक ये पैसेज पे कम था. शो द आंसर. स्ट्रेंथनिंग एक्सक्लूसिविटी. ठीक है, ये वाला +3 हो गया. एंड नेक्स्ट जाते हैं. आई थिंक इसका एक्यूरेसी देखो ओवरऑल 39% था. आई थिंक 1 पे होना चाहिए, सॉरी 2 पे होना चाहिए था. ठीक है, +3. ओके, यहाँ गलती हो गई. बाय शोइंग दी कैन रिडीम कॉस्ट विदाउट नीड ऑफ प्रोडक्शन. आई थिंक इसका रीज़न हम लोग पढ़ लेंगे, बट पहले इसको देख लेते हैं करके कि क्या लिखा है. physicist who frustrated by the extortion. आवाज़ आ रहा है ना? हाँ, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1. आंसर एक्सप्लेनेशन. बढ़िया एक्सप्लेनेशन. देखो क्या लिखा है.
Option 2. This option is incorrect because the passage do not specifically mention that project accelerate the new features, and it does however talks about how millions and millions are defining mainstream. This is correct. The passage is that millions are defining the received wisdom, co-creating and using free as well as on. This shows that it can be successful without relying on intellectual property to recoup their cost, thus challenging the mainstream media. Huh? But in collaborative commons media are defining this received wisdom, co-creating and using free as well as open source. Its spirit bonding. Okay, innovator lack the incentive to bring new product in market because they recoup cannot recoup. ठीक है, ज़्यादा बुद्धि लगा दिया था हमने, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हट दिया था इसमें. ओके, सो लेट्स गो नेक्स्ट पैसेज पे बात करते हैं. क्या है नेक्स्ट पैसेज, देख लिया जाए. नेक्स्ट पैसेज को देख लिया जाए. नेक्स्ट पैसेज क्या है, नेक्स्ट पैसेज पे जिसका भी ये है उसने अटेम्प्ट मारा था, बट हम लोग तो सारा अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू थिंक ऑफ इट. ठीक है, वी आर गोइंग टू जस्ट क्लियर दिस शिट. ठीक है, एंड वी स्टार्ट एट ओके. पैसेज अर्बनाइजेशन के ऊपर है, डोमिनेंट कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी है, सोशल हेट्रोजेनिटी. ठीक है, क्राइम्स के बारे में थोड़ी सी बड़ी लग रही है पैसेज. चार है इसके, यहीं पे करते हैं.
यहाँ पे हो रहा है A वर्सेस C, the direct connection between crime and the intense discrimination, I don't know which of the best is well done. It took me 12 minutes. ओके, आई डोंट थिंक इसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है इस पे। हम देखते हैं क्या होता है। इसलिए मैंने इसको 2-3 बार चेक करा, बट इफ अगर कैट का एग्ज़ाम अब मैं फिर से दूंगा तो आई एम नॉट गोना चेक एट ऑल। मैं अभी तक इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5 बी ऑप्शन, हमने क्या किया है, हमने डी किया। विच ऑफ द वन फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्राइम रेट इन डेवलप्ड कंट्री आफ्टर हर प्राइमरी बाय डिक्लाइनिंग सोशल कैपिटल। ओके, माइनस -1 6 का हमने क्या किया था, ए किया था। शो द आंसर सी, देखा मेरे को लग रहा था ये वर्सेस सी में -1। ठीक है, स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गलती कहाँ है, एंड वी आर माइनस इन माइनस। 7 नंबर देखते हैं आंसर पर, सी 7 नंबर सी पे है, +3। 8 नंबर ए +3। ओके, तो इस पे अपने को 4 नंबर मिल जाते, और अगर मैं करता ठीक से पैसेज। शुड वी एनालाइज इट? व्हाट डू यू से गाइस, शुड वी एनालाइज द शिट? मेरे पास टैब में देखना होगा स्टडी डंप में क्या चैट चल रहा है। समथिंग पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरा टाइमर चल रहा है कि नहीं। ओके, टाइमर नहीं चल रहा है। वाओ, डू वांट टू डू? यप, कैम स्टडी सेशन भी कर सकते हैं, देखते हैं आज। विवेक स्टडी डंप कोई है क्या इसमें? आई डोंट नो। विवेक स्टडी डंप, अच्छा कोई नहीं। तो वी आर गोइंग टू टेक ब्रेक, उसके बाद फिर वी विल स्टार्ट। Only me and you. Okay, so we are back and we are again starting
our reading comprehension test, and it is not kind of test but test type का test ही है. We have already finished this passage. अब हम लोग जाएंगे and we will go and see कुछ यूनिक करते हैं. ठीक है, पैरासमरीज करके. ठीक है, पैरासमरीज में टाइम मेरे को लगता है, बट आई एम वेरी गुड एट पैरासमरीज, तो मैं कर लूँगा. एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कि पैरासमरीज कर सकते हैं, तो आई जस्ट टेक माई पॉज. लेट्स स्टार्ट. देखो, पैरासमरीज करने के लिए कोर आइडिया जानना होता है. क्या लिखा है देखो, जैसे कि रियल वर्ल्ड liberal democracies never fully live up to their ideals of freedom and equality. Rights are often violated. The law never applies equally to the powerful as it does to poor and weak. Okay. Moreover, conflict existing between goals of interesting conflict is goal of greater freedom often entails increased inequality, while effort to equalize outcome reduce freedom. हाँ, सही बात बोल रहे हैं. अगर आउटकम को इक्वलाइज करना है तो फ्रीडम कम करना है. सक्सेसफुल डेमोक्रेसी डिपेंड नॉट an optimization of its ideals but the balance between individual freedom and political equality, and between a capable state increasing legitimate power. The many democracies try to do a whole lot of more than this through policies that they try to promote economic growth, support for technology, but the effective recognition of citizens as equal adults with a capacity to make political choice is a minimal condition for a liberal democracy. Okay, तो ये बोल रहा है कि जो रियल वर्ल्ड की डेमोक्रेसी. ठीक है, 1 मिनट में तो आपने पढ़ लिया था. ठीक है, पर एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ खुद को. बट ऑप्शन देखते क्या लिखा है. लिबरल डेमोक्रेसी फेस चैलेंज इन fully realizing their requiring a balance between their ideal state to ensure effective recognition of citizen as equal political decision maker. Successful balance freedom and equality while recognizing as adults capable of making political choice despite inherent conflict between ideals and challenges posed by the power imbalance of right violence struggle to achieve their ideal freedom due to inherent corner and right violation. ठीक है, necessitating a balance between individual freedom, political equality, and institution that constrain state power. To be a successful must balance between equality, uphold the recognition, ठीक है, uphold the recognition as equal adults of making even in the face of right. ठीक है, ये uphold के मतलब नहीं पता अपने को. Let's understand what is written here. Okay, real world never fully live up to. ठीक है, fail नहीं बोला, never. Underlying ideals of equality. Rights are often violated. ठीक है, जो rights है वो often violated है. The law never applies equally. ठीक है, to powerful as it does to poor and weak. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि liberals जो है वो अपने ideals पे फुली लिव अप नहीं करते, बिकॉज राइट्स जो है वो इंडिविजुअल राइट्स वायलेट हो जाते हैं, एंड तुम्हारे जो लॉ है वो इक्वली किसी पे अप्लाई नहीं होते हैं. मोर ओवर आ रहा है, मतलब कि कंटिन्यूएशन है. मोर ओवर एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बिटवीन गोल्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी. एंड ये क्या बोला है कि जहाँ पे ग्रेटर फ्रीडम होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी होगा, और जहाँ पे तुम ये आउटकम को, मतलब कि तुम्हारा इक्वालिटी बढ़ाओगे वहाँ पे तुम्हारा फ्रीडम कम होगा. तो ये कॉन्फ्लिक्ट आते रहते हैं. ठीक है, अगर इसके आइडियल में भी कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर तुम इक्वालिटी बढ़ाओगे तो फ्रीडम गिरेगा, एंड अगर तुम फ्रीडम बढ़ाओगे तो इक्वालिटी गिरेगा. तो ये ऑथर ये बोल रहा है.
अब यहाँ से सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के बारे में बात करेगा, ठीक है। सक्सेसफुल डेमोक्रेसी डिपेंड नॉट एट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इट आइडियल्स, तो वो अपने आइडियल्स को ऑप्टिमाइज नहीं करता है कि मतलब कि हाँ हम लोग को बेस्ट ले जाना है या फिर बेस्ट ले जाना है, इस पे नहीं, बट अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड बीइंग capable state exercising legitimate power and the institution of law and accountability that seek to constrain in, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज है, दिस इज नॉट अबाउट टू फुलफिलिंग द आइडियल्स बट टू गिविंग अ बैलेंस बिटवीन इट, ठीक है। अब मेनी डेमोक्रेसी ट्राई टू डू अ होल लॉट ऑफ मोर देन दिस, वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं इससे ज़्यादा। Through policies, they try to promote several things, but the effective recognition of citizen as an equal adult with a capacity to make with a minimal condition for being a liberal democracy। तो बोल रहा है कि तो जो डेमोक्रेटिक स्टेट है वो लोग बैलेंस क्रिएट करते हैं, और बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, बट जो मेन है वो है कि इक्वल सिटीजन हो और दे हैव फ्रीडम टू चूज टू मेक पॉलिटिकल चॉइसेस। देखते कहाँ लिखा है, देखो, लिबरल डेमोक्रेसी फेस चैलेंज इन फुल्ली रियलाइजिंग देयर equality, requiring a balance between these to ensure requiring, I don't think so, मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा, ठीक है। सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बैलेंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी वाइल रिकॉग्नाइजिंग एज अ adult capable of choices despite inherent conflict between these ideals, the challenge posed by power imbalance। हाँ देखो, despite inherent conflict, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है between these ideals and the challenges posed by power imbalance and rights violation, तो दो लग रहा है अपने को। लिबरल स्ट्रगल टू अचीव देयर आइडियल ड्यू टू इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड, ठीक है, नेसेसिटी इन आई डोंट थिंक सो टू कंसिडर अ लिबरल और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी मस्ट बैलेंस बिटवीन इक्वालिटी, अपहोल्ड द रिकॉग्निशन ऑफ सिटीजन एज मेकिंग इवन इन द फेस ऑफ राइट वायलेशन एंड पावर इम्बैलेंस। आई डोंट थिंक सो, आई दो पे, ठीक है, अपना दो पे हो गया। एंड वी टुक 7 मिनट एंड दिस इज द वर्स्ट टाइम वी कैन से। लेट्स गो। 24 नंबर था एंड आंसर एक्सप्लेनेशन शो आंसर, देखो सेकेंड नंबर है। तो आई एम रियली गुड एट पैरा समरीज, बट द प्रॉब्लम इज I just do it slow, so we are going to speed up। बस मेरे को 2 टाइम लगता है, ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा लगता है पढ़ने में। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वाला, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन एनिमल्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। द सेंट्रल, ठीक है, the central goal of animal is to eat, okay, ठीक है, the founding father of ecology, and yet most of the time animals are doing nothing in particular। Further research has in study research found that laziness as measured by the percentage of daylight spent in activity was in fact widespread among animal lions, lions and 3 and 2 walruses, and even in bee and ant society, the classical paragons of hard work। Most workers are inactive in measurement, ठीक है। Should we now declare that all animals are affluent, have limited, not quite biologists that know that evolution approach with a ruthless efficiency, so any apparent laziness is seen and some kind of a function in research found that colonies maintain a pool of inactive to step in new works, or when the workers get lost, and they sometimes help to store food. Others have seen that in having inactive around the place of fatigue leads to better long term success in colony। ओके, तो बाद में एंट के बारे में बात हुआ, ठीक है। ये बोल रहा है कि एनिमल का गोल खाना होता है,
और ये प्रूव कर दिया गया है कि बहुत सारे एनिमल्स काफ़ी कम टाइम लेते हैं, बट रिसर्च बताया कि भाई एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन का थ्रू होता है। मोस्ट एनिमल रेस्ट मोर देन दे वर्क, बट दिस अपेरेंट सर्व्स अ पर्पस इन एवोल्यूशनरी टर्म्स as seen in bee and ant colonies where inactive workers are crucial for replacing fatigue worker and long term success। ठीक है, ये तो लग रहा है अच्छा। while animals often appear to be lazy, often appear to be lazy, research suggests that this inactivity search while inactive contribute inactive workers in animal society such as bees help to ensure success new worker rises and other worker lost with that apparent laziness। No animal has an evolutionary function। ठीक है, ये वाला ठीक लग रहा है। बट यहाँ पे apparent animal despite their central goal are often found to be inactive, but this inactive serves as purpose। despite their central goal are often found, क्या बोल रहा है भाई? द सेंट्रल गोल ऑफ, देखो अब यहाँ पे पढ़ते, ठीक है फटाफट। द सेंट्रल गोल ऑफ एनिमल्स इज टू ईट, द फाउंडिंग फादर आर्ग्यूड चार्ल्स एल्टन, and yet most of the time animals are doing nothing in particular। ठीक है, further the research of Hoon has borne out researchers found that the laziness of measure is inactive widespread among the animals around 300 most involved and even the bee and worker are inactive in the more than that should we now declare arguments and have a limited needs। okay, limited needs के बारे में not quite operate with ruthless efficiency, so apparently some kind of function and the research found that some limited pool of inactive they sometimes help to stress the researchers have found that having inactive ठीक है, despite their central goal to eat are found to be inactive। ठीक है, are often found to be inactive, but this inactivity serves a purpose in evolution with an I think fourth पे जाना। are crucial for replacing fatigue workers and यहाँ पे फिर inactive workers के and ensuring colonies long term success। ठीक है, food storage, ठीक है, while not adapting new work demands often appear to be lazy। It suggests that this appear to be lazy। ठीक है, दो नंबर एलिमिनेट है। ठीक है, आई थिंक चार नंबर को लॉक कर देंगे। बट रिप्लेसिंग फटीक वर्कर एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ कॉलोनी, यहाँ पे दिया है कि रिप्लेस वर्कर्स, तो ये तो यहीं तक है। अदर रिसर्चर्स, ठीक है, वेयर इज द पार्ट ऑफ ये स्टोर फूड,
ये तो यहाँ पे लिखा है फूड स्टोरेज। तो अपन लोग 3 पे जाते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग 3 जस्ट बिकॉज ऑफ यू। एंड हेयर 6 मिनट 24 सेकेंड। 6 मिनट 24 सेकेंड, 6 मिनट 24 सेकेंड। ठीक है, देखा, हक दिया हमने, देखा ना, हक दिया। मेरे को लग रहा था 4 होगा, बट मेरे को 4 समझ नहीं आ रहा था बिकॉज ऑप्टेन अपियर टू बी लेजी कैसे हो सकता है। शिट यार, हक दिया। 3 4 ही होगा। ओके 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 ओके। अकॉर्डिंग टू हाउ, ये क्वेश्चन का आंसर करना होगा। क्या बोलते गाइस, करते हैं? ओके, सो शुड वी डू और शुड वी नॉट? We should do that. Para summaries is not for easy people. ये 100% करेक्ट होगा कि नहीं होगा, गारंटीड नहीं किया जा सकता है, बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब तो थोड़ी बहुत तो मिसहैप्स तो होते रहेंगे, बट वी हैव टू गेट फास्टर। फास्ट जितना होगा, द प्रॉब्लम इज कि वी हैव टू गेट इट टू दैट शिट। ओके, तो चलो, अकॉर्डिंग टू हाउ I will go for one.
3 मिनट, ठीक। 3 मिनट 6 सेकंड। 3 मिनट 6 सेकंड। लुक, ओके, सो गलती कैसे हुआ और क्या क्या लगा मेरे को, वाई नॉट एवरीथिंग एंड वाई एवरीथिंग। अपन लोग अब बताते हैं मैंने क्या किया। देखो, सबसे पहले बात हो क्या रहा है, ठीक है। देखो, हार्वर्ड अपॉर्चुनिटी इनसाइट्स है, ठीक है। हार्वर्ड अपॉर्चुनिटी इनसाइट्स ये बोला कि जो चांस है तुम्हारा, ठीक है, चांस है चिल्ड्रन का इन यूएस अर्निंग मोर देन देयर पेरेंट्स हैव डिक्लाइंड ड्रामेटिकली ओवर पास्ट हाफ सेंचुरीज। जो 90% था ये वाला, तो आज 50% पे, ठीक है। यहाँ तक क्या बात हुआ, यहाँ तक बात हुआ, ठीक है। यहाँ तक लास्टर टूल को यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक एक स्टडी हुआ, स्टडी बताया कि जो चिल्ड्रन है अब नो मोर आउट अर्न कर सकते अपने पेरेंट को। जो चांसेस थे आउट अर्न करने के वो डिक्लाइन कर गए 50 साल में। अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कि द यूएस हैज ऑल्सो हैज अ ग्रेटर इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। तो अब यहाँ से ऑथर बोल रहा है, ठीक है, स्टडी हुआ ये, ऑथर बोला कि यूएस ऑल्सो हैज ग्रेटर इनकम and wealth inequality that any other industrial country according to some fucking चूतिया। ओके ओके, अग्रीड। ऑथर बोला कि भाई कोई और कंट्री से ज़्यादा इनइक्वालिटी यहाँ पे है इनकम पे। अब ये यहाँ पे एड ऑन है एंड इट इज़ द मोस्ट एक्सट्रीम लेवल ऑफ 100 ईयर्स में सबसे एक्सट्रीम पे गया है, जो कि अपने को काम नहीं है। तो ये ऑथर बोला कि यहाँ पे जो इनकम इनइक्वालिटी है और वेल्थ इनइक्वालिटी है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबली एक रिपोर्ट आया है कि 2/3 ऑफ द मोर देन 42 ट्रिलियन न्यू वेल्थ क्रिएटेड सिंस 2020 हैज़ गॉन अप टू टॉप 1%। मतलब कि ग्लोबली जितना भी नया वेल्थ क्रिएट हो रहा है उसमें से 2/3 है वो टॉप 1% हो गया है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। हायर एजुकेशन हैज लॉन्ग बीन सीन एज अ प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग द लाइफ प्रोस्पेक्ट ऑफ यंग पीपल। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि हायर एजुकेशन वाज ऑलवेज सीन दैट कि जो जितना ज़्यादा पढ़ाई करेगा देयर लाइफ विल इम्प्रूव अ लॉट। बट यहाँ पे अब क्रिटिक्स बोलता है कि हायर एजुकेशन के बारे में, क्रिटिक्स बोलता है कि भाई हायर एजुकेशन में भी इनकम बढ़ा दे, पर हायर एजुकेशन एक्सेस करना और अफोर्ड करना, और जो ये चैलेंज है एक्सेस करना और अफोर्ड करना है, ये सोसाइटल इम्पैक्ट गिरा चुका है, ठीक है। ये था इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक है। ना एक पैसा का अपने को बुद्धि लगाना है, ना एक पैसा का कुछ करना है। तो दिस इज व्हाट वी आर ऑलवेज ट्राई टू डू, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर ऑप्शन, ठीक है। नहीं पहले दूसरा पे आते हैं, ठीक है। दूसरा में गलती कहाँ था, एज द चांसेस ऑफ चिल्ड्रन अर्निंग मोर देन देयर पेरेंट्स डिक्लाइन ग्लोबली, ठीक है भाई। ग्लोबली बात कहाँ हुआ था, ठीक है, डिक्लाइन ग्लोबली बात कहाँ हुआ। यहाँ तो बोला कि चांसेस ऑफ यूएस, ग्लोबली का तो कोई आइडिया नहीं। क्रिटिक्स इन यूएस आर्ग्यू दैट द सोसाइटल इफेक्ट हैज डिमिनिश्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ अफोर्डेबिलिटी इशू व्हाइल इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी राइजेस, ठीक है। यहाँ से अपने को समझ आ गया कि भाई ये था, बाकी सब सही था। क्रिटिक्स इन यूएस आर्ग्यू दैट इन यूएस है, कहाँ से, ये तो नहीं था, ये अपने से बनाया गया, तो इसको काट दिया गया।
critics contend that higher education social impact has been reduced by the access and affordability challenge। एकदम करेक्ट बोला। amid a decline in likelihood of US children out earning their parents and increasing income and wealth inequality। ठीक है, अब तुमको लगेगा कि यार पर अमिड का मतलब क्या होता है? अमिड का मतलब होता है ऑल्सो। ठीक है, अमिड मतलब होता है ऑल्सो। लेट्स सी अमिड, इन द मिडिल ऑफ, अमंग। ठीक है, अमंग वही ऑल्सो अमंग। ठीक है, अमिड इज इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ। ठीक है, बट एक बात बता, अमिड का मतलब मेरे को पता था पर मे बी लिटरल वन नहीं पता था, तो मैंने इसको क्यों कैंसिल किया? देख, क्रिटिक्स तो कंटेंट किया अ मिडिल ऑफ डिक्लाइन इन द लाइकलीहुड कि ये आउटन करेगा एंड इंक्रीजिंग, ये क्रिटिक पे जा रहा है कॉमा, अब क्रिटिक पे जा रहा है। क्रिटिक कंटेंट दैट, ठीक है, क्रिटिक कंटेंट दैट, ठीक है, क्रिटिक कंटेंट किया पर अमिड अ डिक्लाइन इन लाइकलीहुड ऑफ यूएस चिल्ड्रन, इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, द डिक्रीजिंग चांस ऑफ यूएस चिल्ड्रन अर्निंग मोर देन पेरेंट। ठीक है, अभी तक ठीक है। द ग्रोथ ऑफ इनकम एंड इनइक्वालिटी ग्लोबली have led to the criticism in US that about the decreasing chance of US children earning more than their parents and the growth of income and wealth inequality globally हैं globally। यहाँ पे बोला है कि द यूएस हैज ऑल्सो ग्रेटर इनकम देन एनी इंडस्ट्रियल कंट्री अकॉर्डिंग टू ओसीडी। तो ये ग्लोबली हर जगह होगा, क्वेश्चनेबल है। ठीक है, आई डेंट थिंक दैट लेड टू द क्रिटिसिज्म। ठीक है, लेड टू द क्रिटिसिज्म इन यूएस अबाउट हायर एजुकेशन सोसाइटल इम्पैक्ट। लेड टू ना, ये लोग बोला कि जो हायर एजुकेशन है इसका अभी उतना सोसाइटल इम्पैक्ट नहीं है। व्हाई? बिकॉज जो अर्निंग है वो इधर चले गया। पर ये क्रिटिसिज्म ग्लोबली, ये डिक्रीजिंग चांसेस, ये मेरे को क्वेश्चनेबल लगा। नाउ लेट्स गो फॉर 1 and 3। The decline in children's chances of out-earning their parents in US and increasing global wealth inequality has sparked criticism of what? Higher education societal impact। समझा? Led to criticism in US about societal spark of higher, which is hampered by the excess of challenge। यही तो बोल रहा है, argue that the excess has been reduced by the societal impact। अब ये दोनों में who is the most? I will pick one. That is the easiest answer. And we did it in 3 minutes 6 सेकेंड। अब इसको करेंगे अपन लोग सुसु के बाद। ठीक है।